Welcome to ICRA IAS. So today we are going to be covering our weekly current affairs compilation, that is from the date 23rd of May to 29th of May. So first news we have is about the ASHA workers and they are being honored by WHO. तो हुआ ये है कि भाई जो आशा वर्कर्स हैं जितने भी उनको एक अवार्ड रिसीव हुआ है, द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 in the backdrop of the ongoing 75th World Health Assembly. कुछ और भी रिसिपिएंट्स हैं इसके, अफगानिस्तान के कुछ पोलियो वर्कर्स हैं जिनको they were who were shot dead and killed by armed gunmen, उनको भी साथ में ये अवार्ड मिला है. तो ये आशा वर्कर्स होते कौन हैं? आशा वर्कर्स बेसिकली वॉलंटियर्स होते हैं फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी who are trained to provide information and aid to people in accessing benefits of the various healthcare schemes of the government. They act as a bridge connecting marginalized communities with facilities such as primary health centers, sub-centers and district hospitals. The role of these communities health volunteers under the ये जो है ये आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM के अंदर, जो कि 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था. एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए और एजुकेशन जो है वो कम से कम 8th क्लास तक होना चाहिए. अभी एज ऑफ नाउ अराउंड 10.4 लाख आशा वर्कर्स जो हैं वो पूरे अक्रॉस द कंट्री काम करते हैं और जो लार्जेस्ट वर्क फोर्सेस हैं आशा वर्कर्स की वो मतलब स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से हैं. सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, दैट इज़ 1.6 लाख. और गोवा जो है वो अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी आशा वर्कर्स नहीं है. इनके रोल्स और फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, हर घर में डोर टू डोर जाना इन देयर डेजिग्नेटेड एरियाज जो उनको भी अलॉट होते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बेसिक न्यूट्रिशन, hygiene practices and the health services available. Focus on ensuring that women undergo antenatal checkup, maintain nutrition during pregnancy, deliver at the healthcare facility, and provide post-birth training on breastfeeding and complementary nutrition of children. They also counsel women about contraceptives and sexually transmitted infections. They also ensure that children get immunized और साथ में ये जितने भी TB पेशेंट्स हैं who are under directly observed treatment उनको medicines भी provide करते हैं. फ्यूल टैक्स, अभी रिसेंटली जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन द पेट्रोल एंड डीजल बाय 8 रुपीज पर लीटर एंड 6 रुपीज पर लीटर रिस्पेक्टिवली. गवर्नमेंट ने साथ ही साथ कस्टम्स ड्यूटी जो है ऑन रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएटरीज फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शंस एंड आयरन एंड स्टील उनको भी घटा दिया है. अब रीजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो डिसीजन लेने का ये है कि इट इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू कूल द सर्ज ऑफ इन्फ्लेशन. Recent data showed that retail inflation had risen to an 8-year high of 7.9% in April, while wholesale inflation has been in double digits, that is 13 for 13 consecutive months. As per some analytics, the cut in fuel taxes could help reduce inflation directly by around 20 basis points in June. And this is the second time in the recent past that the center has cut fuel taxes. In November last year also, the center had lowered the excise duty on petrol by 5 and diesel by 10 rupees. जितना भी entire burden है of these tax cuts will be borne by the center. ये जो एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी क्या होती है? देखिए, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. एक्साइज ड्यूटी जो है इट इज फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल. इट इज द ऑपोजिट ऑफ
custom duty in the sense that it applies to goods manufactured domestically in the country, while customs is levied on those coming from outside of the country. ठीक है, ये आई थिंक आशा वाला थोड़ा नीचे आ गया है। राजा राम मोहन रॉय, celebrating the 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy in West Bengal, the unveiling of a statue of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Salt Lake, by Minister of Culture will mark the inauguration of center's celebration plans. अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। He was the father of the modern India's Renaissance and tireless social reformer who inaugurated the age of enlightenment and liberal reformist modernization in India. उनकी लाइफ जो है he was born on 22nd of May 1772 in a very orthodox Brahmin family in Bengal. उनका जो early education था it included Persian and Arabic language along with Sanskrit and Vedas and Upanishads. वापस जब वो अपनी पढ़ाई करके अपने विलेज में आए, अपने गांव में आए, तो एट द एज ऑफ द 16 he wrote a rational critique on Hindu idol worship. From 1803 to 1814, he worked for East India Company as a personal diwan, first of Woodford and then of Digby. 1814 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी जॉब से एंड देन ही मूव टू कैलकाटा इन ऑर्डर टू डिवोट हिज लाइफ टू रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. Ideologically अगर हम देखें तो he was basically greatly influenced by Western modern thought and stressed on rationalism and modern scientific approach. उनका ये भी मानना था कि भाई ये जो जितने भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज हैं, जितने भी हमारे पुराने सोच जो है हिंदू कल्चर की, have become causes of the injury and detrimental to social life and sources of trouble. उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं दोनों मतलब सोशल रिफॉर्म भी होते हैं और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी होते हैं. ही वाज मेरली वेरी मच अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथीज्म और उनका ये मानना था कि जो मोनोथीज्म है इट आल्सो इज द फंडामेंटल मैसेज ऑफ द वेदांता. वो सोशल इक्वालिटी में मानते थे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके, एंड दस वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ द कास्ट सिस्टम. ब्रह्मो समाज जो है उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मो सभा के नाम से 1828 में उनको एस्टैब्लिश किया था एंड देन इट वाज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज. इट्स चीफ एम वाज टू वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड. वो प्रीस्टहुड के खिलाफ थे, वो रिचुअल्स के खिलाफ थे, वो सैक्रिफाइसेस के खिलाफ थे. वो बेसिकली जो ब्रह्म समाज के फॉलोअर्स थे वो सभी की सभी प्रेयर्स, मेडिटेशन और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के ऊपर बिलीव करते थे और दे आल्सो बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स. It was the first intellectual reform movement of modern India and it led to the emergence of the rationalism and enlightenment in India. इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं. सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा, ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन 1814, द कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821, द ब्रह्मो सभा which later was renamed as Brahmo Samaj. It was founded in 1828. He campaigned against the caste system, untouchability, superstitions, and use of intoxicants. He was well known for his spearing thought and action on the emancipation of women and especially on the abolition of sati and widow remarriage. He also attacked child marriage, illiteracy of women, and degraded a state of widows and demanded the right of inheritance and property of women. और जो इन्होंने जो बहुत काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है, काफ़ी इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है. जो अबॉलिशन ऑफ सती जो उसका जो एक्ट बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरलशिप ऑफ विलियम बेंटिक, उसमें भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था. एजुकेशनल रिफॉर्म्स में ही सपोर्टेड डेविड हायर्स एफर्ट टू फाइंड द हिंदू कॉलेज इन 1870 and while Roy's English school taught mechanics and Voltaire's philosophy. He followed it up with the Anglo-Hindu school in 1822 and 1830, assisted Alexander Duff to set up the
General Assembly's institution, which later became the Scottish Church College. 1825 में he established the Vedanta College. ये उनके कुछ literally works हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं. Religious reforms में he first published work Tuhfat-e Muhyiddin, a gift to deists, published in 1803, exposed the irrational religious beliefs and corrupt practices of the Hindus, as the belief in revelations, prophets, miracles, etc. 1814 में he founded Atmiya Sabha in Calcutta, जो बेसिकली कास्ट रिजिडिटी, जितने भी मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, सोशल एल्स थे, उसके अगेंस्ट कैंपेन करता था. ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द रिचुअल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड. रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें भारत पथिक के नाम से बुलाते थे, by which he meant to say that Raja Ram Mohan Roy combined in his person the underlying spirit of Indic civilization in spirit of pluralism, tolerance and a cosmic respect for all the forms of life. Political and economical reforms में उन्होंने जो है he supported the movement for free press in India. When press censorship was relaxed by Lord Hastings in 1819, जो राजा राम मोहन रॉय हैं, he founded 3 journals. पहला था Brahminical Magazine, फिर था Bengali Weekly and फिर था Samvad Comedy, and the Persian Weekly Miratul Akhbar. Section 153A and 295A of IPC. तो ये है मुद्दा पूरा कि भाई जो डॉक्टर रतनलाल है, एक दलित अकेडमिशियन है, ही वाज अरेस्टेड फॉर एन ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट ऑन ज्ञानवापी मॉस्क रो. तो ही इज alleged टू हैव प्रमोटेड डिसहार्मनी और एनमिटी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स, जो कि है आता है सेक्शन 153A इन द इंडियन पीनल कोड, एंड इंटेंशनली एंड maliciously hurt religious sentiments in 295A in the IPC. अभी sections कहते क्या हैं? देखिए, जो section 153A है, it basically deals with promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. और जो section 295A है, it deals with deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion and religious beliefs. ऊपर वाले में 153A में जो है 5 साल की और फाइन सजा हो सकती है. इसमें जो 295A है, इसमें जो है 2 साल की सजा और फाइन या दोनों भी हो सकते हैं. इंक्रीज्ड यूज ऑफ 2 प्रोविजंस, मतलब कि इन दोनों का. सो बेसिकली जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि मोर देन 4 जंप्स, दैट इज 458% का जो है वो जंप देखने को मिला है, जो इन सेक्शंस के अंदर जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें. लेकिन जो कन्विक्शन रेट है, इट इज ओनली 20.4%. लुक एट द डिफरेंस, है ना. सच सेक्शंस आर नीडेड. क्यों जरूरी होती है, क्यों जरूरत होती है इनकी? तो इंडिया बीइंग अ डाइवर्स एंटिटी नीड्स सच लॉ टू स्टॉप रिलीजियस incendiary feelings at the bud. It also helps keeping in check कि भी radicalism जो है वो जितना भी communal divisions के बीच में grow कर रहा है, उसको भी उसके लिए भी एक cap का काम करता है. It also helps in keeping a check in domination of one community. It also helps propagating of secular values by making religious extremism, insensitivity a punishable offense. इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ये पहला तो ये है कि भाई एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है ना, कि इट लीड्स टू द मिसयूज ऑफ द लॉ एज इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी. अनलाइक बॉडीली हार्म दैट कैन बी वेरीफाइड, सेंटिमेंटल हर्ट जो होता है उसको आप किसी ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते है ना. द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी ओवरराइड्स इट एज अ सेंटिमेंट्स वल्नरेबिलिटी. फिर भी एक ये भी पॉइंट है ओवरबर्डन जुडिशियरी, कि ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशियरी जो है, इट पुट अंडर द फर्दर स्ट्रेन ड्यू टू resources it needs to direct towards frivolous cases, hindering efficiency of the judicial systems.
sugar export curbs and their impact. Government of India has notified that sugar exports will be restricted or allowed only with the permission. तो गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली जितने भी शुगर का एक्सपोर्ट है इसको जो है रिस्ट्रिक्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जो कैटेगरी है उसमें डालने का फैसला किया है which will be effective from June 1. The government has also moved export of sugar from open category to restricted category. और इसका जो एक्सपोर्ट है वो वैसे तो रेस्ट्रिक्टेड है एंड इट विल बी अलाउड ओनली विद स्पेसिफिक परमिशन. और इस स्पेसिफिक परमिशन जो है वो आपको डायरेक्टरेट ऑफ शुगर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से लेनी पड़ेगी. अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई ये इसको रेस्ट्रिक्ट करने की. देखिए सबसे पहले जो है एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि भाई डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी जो शुगर की हो हमारे यहाँ पहले तो वो ज़रूरी है ना, क्योंकि फेस्टिवल्स का पीरियड आ रहा है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जहाँ पे शुगर की जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाती है ना. और एक चीज़ ये भी पॉइंट करने की है कि भाई ब्राज़ील में जो है इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा है, तो इसलिए ग्लोबल जो सिचुएशन है शुगर शॉर्टेज की वो बढ़ती जा रही है. This may trigger the demand globally, and so far as to safeguard domestic availability and interest, government issued this order. Increase in export. तो जो है रिसेंटली एक्सपोर्ट में इंक्रीज जैसे कि बताया अभी कि ब्राज़ील का जो है वो जितना शुगर प्रोड्यूस होता है उससे कम हुआ था, क्योंकि ब्राज़ील ने जो है इस बार इट प्रोड्यूस्ड मोर एथनॉल दैन शुगर, है ना. क्यों? क्योंकि भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे. ड्रॉट जो है उसने थाईलैंड जो है काफ़ी वो उनका भी शुगर मार्केट अच्छा है तो वहाँ पे ड्रॉट हिट कर गया. और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील. हाउएवर ब्राज़ील हैज ऑलवेज लेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. क्लाइमेट जो है शुगर केन को ग्रो करने का, इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट. Sugar beet जो है is a permanent alternative of sugar cane, and it requires 10 to 18 months to mature depending upon the geographical conditions. Uyghurs. So basically जो United Nations का जो High Commissioner है for Human Rights, they have उनके जो क्या नाम है इनका, Michelle Bachelet, I think this is the pronunciation, is at the Xinjiang region where Beijing is alleged to have repressed Muslim minorities in China. ठीक है. और चाइना ने ये कहा है कि भाई it's hoping that the visit can clarify the misinformation. अब इशू ये है कि भाई चाइना जो है it has been treating the Uyghur community with not so very respectful manner, है ना. और जो कुछ credible reports हैं they have indicated over 1 million people have been arbitrarily detained in Xinjiang and that there is widespread surveillance. और जो उगर की वहाँ की जो कम्युनिटी है उन पे काफ़ी सर्विलेंस किया जा रहा है, टारगेटिंग उइगर्स एंड restrictions on their fundamental freedom. इस पे चाइना का ये रिस्पॉन्स है कि भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना. उइगर्स बेसिकली एक मुस्लिम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो उनकी जो लैंग्वेज है इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू टर्किश एंड दे कैन बी ट्रेस्ड टू सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया. Lookout circular. Government of India wants to keep the lookout circular details under wrap. अभी होता क्या है तो it is a notice to stop any individual wanted by the police, investigating agency or even a bank from leaving or entering the country through designated land, air and sea ports. The Bureau of Immigration is asked to stop any such individual against whom such a notice exists from leaving or entering the country. There are 86 immigrant checkposts across the country, and LOCs can be modified, deleted, withdrawn only at the request of the originator. LOC होती क्या है तो जो existing मतलब
होती तो हमने देख लिया, इसको इशू कौन करता है? तो इशू जो है, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, LOCs आर इनिशिएटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज विच इंक्लूड CBI, ED, अपना DRI, इनकम टैक्स, और भी बहुत सारी एजेंसीज इसको इशू कर सकते हैं। न्यू स्पीशीज ऑफ वेनेमस स्नेक रजिस्टर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो मेघालय में ये मिली है ये स्पीशीज। Recorded simultaneously in Mizoram, the snake has been named Maya's pit viper after the deceased mother of army officer, one of the seven author of a study on it. ठीक है? The name of the pit viper, recognized as Trimecerus mayai, is also believed to allude to Maya, meaning the supernatural powers or the illusion related to the local agents. The new species was relatively common in Meghalaya, Mizoram, and even in Guwahati. India Hypertension Control Initiative (IHCI). India registered success with BP treatment and control. The India Hypertension Control Initiative, started in 2018, has been successful in treating and controlling hypertension. Cardiovascular diseases are leading cause of death among adults in India. And one of the major drivers of the heart attack and stroke is untreated high blood pressure or hypertension. ये जो इनिशिएटिव है, एक मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है इन्वॉल्विंग द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO India, Ministry of Health and Family Welfare, and the state governments to improve blood pressure control for people with hypertension. The project, initiated in 26 districts in 2018 and has expanded to more than 100 districts by 2022, and more than 2 million patients were started on treatment and tracked to see whether they have achieved the BP control. Potential economic impact of COVID-19 related school closures. India's GDP to take a big hit due to pandemic-like learning losses for students. एक ADB की एक स्टडी आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की. A new working paper titled Potential Economic Impact of COVID-19 Related School Closures was published. इसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो GDP है इंडिया की, विच इज़ अमंग द कंट्रीज विद द longest school closures during the COVID-19 pandemic, would see the highest decline in South Asia due to learning losses of the young. Starting with a $10 billion dent in 2023, the country's economy could take a nearly $99 billion hit by 2030. इसके जो recommendations रहे हैं कि India has the highest number of children enrolled in primary and secondary education among the Asian economies, covered in the paper at 255.74 million. The number of the students in tertiary education were second only to China at 36.39 million. While mooting greater investments in education and skills with a focus on narrowing the digital divide, the study has suggested the most immediate challenge for governments is to help students recover the lost opportunities by conducting assessments among impacted children. ADB जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में. इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है. So that is all for today. Thank you for watching.